Hello everyone, am I audible clearly? Guys, am I audible? Yes, ma'am. Okay, thank you, Saurabh. Okay, so today we'll learn three new things. Okay, one, we will learn about least comprehension. Two, we'll learn about how we can open and close a file and write something and read something from the file, from a text file, okay, with the help of code. And the third thing is we'll learn about user-defined functions. So we know about few uh, inbuilt function, right? But we'll learn about how we can create our own function, how we can create user-defined function. Okay, so let's start. Can you see my screen? Yes, ma'am. So let's start with least comprehension. You remember, yes, in the last session we learned about for loops. Remember everyone? एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम मेरी लास्ट सैटरडे संडे की क्लासेस मिस हो गई थी। अच्छा. सो आप क्या रिपीट कर सकते हो एक बार? It's very long, अनामिका. तो अगर मैं रिपीट कर भी दूँ ना तो नो ये मैम, नॉट नॉट पूरा नहीं, बट हाँ बीच बीच में, जैसे अभी आपने ये वाला टॉपिक पे बोला लिस्ट हाँ रन का, तो उस टाइप पे। हाँ तो एवरी टॉपिक अनामिका इतना बड़ा है ना कि जी। उसको समझने में ही आपको पूरा 2 घंटे लग जाएगा. तो आपको तो पता ही है कि एक टॉपिक के ऊपर मान लो फॉर लूप. अभी फॉर लूप क्या है, कैसे यूज होता है, वो ही मैंने समझाया लास्ट 2 घंटे में, मान लो. तो वो आपको पूरा आइडिया तो नहीं आएगा, पर ये जो मैं दिखाऊंगी शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए. बट एक्सप्लेनिंग द होल थिंग उसमें तो टपल तक क्लियर है मैम, बट लास्ट ये हाँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा गो थ्रू करके आना चाहिए था, रिकॉर्डिंग देख के. नहीं तो इसमें भी आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा बट पूरा नहीं आएगा, बिकॉज एवरी टॉपिक इज कम्प्लीटली डिफरेंट. आज भी आप जो सीखोगे ना उसमें, यहाँ पे तो मैं फॉर लूप यूज कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं रिपीट कर दूंगी बट पूरा तो आपको नहीं समझ में आएगा. ओके, आज भी ये तीनों आपको समझना है, तो मेक श्योर के इन बिटवीन मैं ट्राई करूंगी कि आपको दिक्कत ना हो, बट स्टिल you won't be able to understand the complete thing. ओके, थैंक यू। Okay. Okay. So, coming to loops. So, in the last session, we learned about loops. Loops are nothing. It helps us to iterate through each element from a list. मान लो मेरे पास एक list है and I want to print every element in that list one by one. So, for that reason, we can use for loop. Now, this loop will help us to iterate through each element. अभी अगर मैं for loop यूज करूँ तो यहाँ से मैं एक एक आइटम लेके उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ. मान लो मुझे आई वॉन्ट टू एड 5 विथ ईच एलिमेंट, so I can take 1 plus 5, 6. फिर I can take the next number and then I can add 5 with it. Then I can take the next number and I can add 5 with it. So if you want to do something with all the elements in a list, we can use for loop. So loop we use so that I can iterate through each element in a list or each element in a tuple, okay, or each element in a dictionary. Now, let's say this is our list. Okay, now what I want to do, I want to do square of this each of the number and I want to create a new list with it. Okay, so what is my goal? My goal is to create a new list with the help of this existing list, and जो नया list हम create करेंगे वहां पे सारे इस नंबर का स्क्वायर हो. तो लेट्स टेक अ शीट एंड वहां पे जाके मैं लिखती हूँ.
So what we are going to do, let's say we have a list 1, 2, 3, and we want to create another one list where we will keep all the squared value of these numbers, meaning 1, 2 square, 3 square, like this. Okay, so you have this list and you need to create this list. This is your goal. Okay, so how we can do that? So let's say we have a list 1, 2, 3. Now what we are going to do, we are going to run one for loop. So for I in list. Okay, now I'm going to take one number and we'll do square of that number. Okay, and स्क्वायर करने के बाद जो आंसर मुझे मिलेगा दैट आई विल कीप इन अ न्यू लिस्ट. अंडरस्टैंड केयरफुली, ये मेरा एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है और मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है तुम्हें एक लिस्ट दिया गया है एंड यू नीड टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट वेयर यू विल हैव ऑल द स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ योर एग्जिस्टिंग लिस्ट. ओके, नाउ तो उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रन वन फॉर लूप. ओके, you will take one element. So where you have your element, this is your element, right? Now here in S, I'm storing the squared value. Square meaning you can do I square, you can do this, or you can do this. Both are same. Both will give you same answer. 2 into 2, or you can do 2 square. Anything is fine. So now the square value I'm getting, that I'm storing in S. Okay, and that S, that number, I'm going to keep with the help of append. Append करके with the help of append method I can store a new number to a list, right? So that I'm going to store in my list. So for that, what I need to do, I need to create one empty list. Okay, so you will take one number from here, will do square of that number and will add that to your empty list. And like that, I will take one number at a time, will do the square of that number and append that to my empty list. Is this clear to everyone what we are going to do? So it's like you have a bucket, 1, 2, 3, and you have one empty bucket. You are taking one number, putting square on that, and keeping that answer to an empty bucket. So you have one list and you have created one empty list. Now आप एक एक करके number ले रहे हो, doing square of that number and putting that to your empty bucket. Clear? Anyone confused? No, ma'am. Good. चलो अभी ये apply करते हैं. So let's say we have a list of numbers. One, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now our goal is to find out the square value of that number in a list format. So for that I'm creating one empty list जहाँ पे मैं square करके इसको डालूंगी. ठीक है? So I'm giving the name as square. Okay, which is empty. क्योंकि अभी तक मेरे पास कुछ नहीं है इसमें डालने के लिए. So I will run one for loop for I in. So instead of I, you can give any name to your element. ठीक है? I'm giving I. So for I in what? Anyone? For I in, from where we are going to take the numbers? List now. List. List nums, right? Yes. Okay. Now what is the next step? I'm going to take one number and we'll do square of that, right? So let's say for I'm keeping the square value equal to I
into I. Instead of this, you can do I to the power 2. Both are fine. Okay. So I'm doing I into I. Square value. Okay. Now, the number I'm getting. So first number I will get the square value of 1. So that is saved in this variable. तो वो वेरिएबल हमें कहाँ पे अपेंड करना है? The number I'm getting after doing square, that number where we are going to append? एम्प्टी लिस्ट में ऐड करेंगे ना. Yes, empty list में ऐड करेंगे. So list dot append, and what we are going to append? The value I'm getting after doing the square, which is square value. Okay. Now let's print our empty list. Let's see what we have. Okay. Fine. Now this is little lengthy. So the same thing we can do with the help of least comprehension. Okay. How it looks like? The same thing we'll do with the help of least comprehension in one line. See, this is how it looks. In our least comprehension, we have 3 parts. The first part is our expression, output expression. The first part, meaning what you are expecting, like what task you want to do. Okay. After that, we need to mention our iterable, meaning with the help of what you are going to do the iteration. Iteration जो आप करोगे वो किसके help से करोगे? That we need to mention in the second part. Okay. And the third part is, if you have any condition, here in this code we don't have any condition. We are taking the number and doing square of that number. यहाँ पे हमने कोई भी filter या condition नहीं डाला है कि ये criteria fulfill करना पड़ेगा then मैं आपका square करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे. So the third part is not here. So we only have this 2 part. One is what we want, what output expression we are expecting, and the second part is the iterable part. Okay. See, the same thing, the exact same thing we are doing with the help of this. यहाँ पे हमने एक फिल्टर या कंडीशन डाला है जो हमारे ये सिंपल कोड में तो नहीं है. तो ये सिंपल कोड हम यहाँ पे कैसे करेंगे? Let's see. Okay, least comprehension. The first part is output expression. The second part is iterable part. So let's create a square list. Let's take new numbers. Okay, नहीं तो आपको लगेगा कि ऊपर वाला ही नीचे आ रहा है. So let's create a new list where we'll keep 11. Okay, this is our new list. And here we are creating a square list 2 where we'll do the same thing. We'll take one number from the new list and we'll do square of that number. Okay, so what I'm expecting the square of the number, right? So for square of the number, what I need to do? I need to do I into I, or we can do I to the power 2. Okay, now I need to mention my iterable. So for that, for I in new list. Okay, now let's print square list 2. Easy? Is this easy? Ma'am, please repeat again. So ये आपको समझ में आए? Yes, ma'am. So now what we are doing? We have taken a new list, completely new list. अभी हमें same काम करना है इसके ऊपर.
we need to find out the square of these numbers in a new list. Okay, so I have given a new name to my new list जो हम create करने वाले हैं. तो वहां पे I have taken one list and within that I have mentioned two parts. जो हमने यहाँ पे सीखा कि यहाँ पे दो पार्ट होता है. एक एक्सप्रेशन, आउटपुट एक्सप्रेशन जो आपको चाहिए, आप क्या करना चाहते हो, जो नंबर्स आपके पास ऑलरेडी है उसके साथ आप क्या करना चाहते हो, उसका क्या करना चाहते हो आप, दैट इज कॉल्ड आउटपुट एक्सप्रेशन पार्ट. एंड द सेकंड पार्ट इज द आइटरेबल पार्ट. So that we have mentioned here two parts. One, I want to find out the square of the number, existing number. Meaning, मुझे ये 11, 22, 33, 44, 55 ये सबका square चाहिए. So I have mentioned I to the power 2. Okay. Else you can do I into I. Both are same. Now the iterable part for I in dash, for I in new list, which is this one. बस ये जो काम आपने यहाँ पे 2-3 लाइन लिख के की है ना, अपेंड किया है, फिर यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया है, ये सेम काम मैं यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ एक लाइन में कर रही हूँ. आई प्लेड एंड द स्क्वायर लिस्ट टू रेडी. ये सेम काम आपने यहाँ पे की है बट विथ 3-4 लाइन्स. गॉट इट? Yes, ma'am. Got it. So this is called least comprehension. Now here we have one tricky part. What is that? That is this condition part. Okay, why I'm calling this tricky? Because if you have only one condition, you remember if and else, remember, right? Now let me show you another one. अभी मान लो यहाँ पे तो हमने लिस्ट में जो जो नंबर्स था सबका स्क्वायर कर दिए, राइट? अभी मान लो मैं आपको, इफ आई आस्क यू दैट you need to find out the square of all even numbers from your existing list. तो इसके लिए what you need to do? First you need to take your existing list, which is this one. Okay? अभी इसमें से आपको सारा इवन नंबर फाइंड करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है. जो भी ऑड नंबर है उसका स्क्वायर हम नहीं करेंगे. तो वो हम कैसे कर सकते हैं? सी, आई एम टेकिंग द सेम कोड. Okay, the same code I'm taking. Now you need to add one filter कि मैं आपका स्क्वायर तभी करूंगी if I find you even. अगर आप इवन नहीं हुए तो आई विल नॉट डू स्क्वायर. ओके, तो इसके लिए आई नीड टू ऐड वन फिल्टर. ये यहाँ पे हम जो स्क्वायर कर रहे हैं ना, के लिए ये करने से पहले आई नीड टू ऐड वन फिल्टर. ओके, so if my I modulus, you remember modulus? Yes, ma'am. Modulus helps us to find out the remainder part. तो अगर वो उस नंबर को मैंने 2 से डिवाइड की और उसका रिमाइंडर 0 आया, it means that number is even number, right? So I'm taking one number from this list and I'm checking whether that number, उस नंबर को मैं अगर 2 से डिवाइड करूं उसका रिमाइंडर 0 है या नहीं. अगर है, only then that number will go through the next step. अगर नहीं हुआ तो ये तो फॉल्स हो जाएगा ये कंडीशन, राइट? मान लो इफ आई एम टेकिंग 3, नाउ 3 डिवाइडेड बाय 2, द रिमाइंडर इज 1. तो ये जो कंडीशन यहाँ पे मैंने मेंशन की है फॉर नंबर 3, इट इज नॉट ट्रू, राइट? तो अगर ट्रू नहीं हुआ तो इट विल नॉट गो टू द नेक्स्ट लाइन. इफ एंड एल्स से तो इतना हमें पता है, राइट? इफ एल्स जो हमने सीखे थे. Yes, ma'am. So we know that if the number is not even, so here I have mentioned one condition for even numbers. So if your number is not even, it will not go through the next line. So if I take 2 or if I take 4, these are even numbers. So this condition will be true for 4, this condition will be true for 6, this condition will be true for 2, right? So only then it will go to the next line and only then I will be able to do the square of that number and only then I will be able to append that number to my empty list. So I'm adding one filter before doing the square. Okay, so let's play right now and see. We are getting only those numbers who are even. 2 square, 4 square and 6 square. Clear? Now we'll do the same thing.
अभी ये सेम चीज मुझे करना है with the help of least comprehension. So for that what we need to do? I'm just taking the whole thing. Okay, and adding one filter which is if. So if the number modulus 2 equal to 0. This is my condition. If this condition is true, you go and square yourself. Okay. Anyone confused? Bolo, if anyone confused. No, ma'am. Great. Now, coming to another one part. If we have if statement, we understood that first we need to mention the output expression, then we need to mention the iterable, and then we need to mention the conditional part. What if we have if and else both? मेरे पास if भी है and else भी है. So what we can do, let's make it like if the number is even, we'll add even, okay? And if the number is odd, we'll add odd, okay? Meaning, uh, see, this one you understood, this one you understood, right? Coming to this part now. Okay, I'm taking this code again. Okay, here our goal is we are not going to do any square. We'll check if the number is even, we'll add the word even, and if the number is odd, we'll add the word odd. Okay, so for I in list in numbers, if the number is even, then in square list will happen even. Okay, else will happen okay, meaning here I have added one filter for checking whether the number is even or not. अगर ये even हुआ तो मैं फिर जाके ये empty list में even ये वाला word ऐड कर दूंगी. अगर नहीं हुआ तो मैं odd ऐड कर दूंगी. ठीक है, now let's play. ओके, तो अगर ये सेम काम मुझे ये लीस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ करना है तो व्हाट, लाइक कैन यू गेस हाउ वी कैन डू दिस? ये फर्स्ट लीस्ट कॉम्प्रिहेंशन सॉरी आउटपुट एक्सप्रेशन है, फिर आइटरेबल पार्ट है, फिर इफ है, एंड ऑब्वियसली इसके बाद ही एल्स होगा, राइट? So let's try with this. This is my list. तो मैं even ऐड करूंगी और I in list if the number is even, okay, else will add odd. Okay, now try. देखते हैं होता है या नहीं. Okay, it's not working. Why? Because when you have only one filter, only if in your list comprehension, then we add that at the end part. Meaning the sequence is like output expression, iterable, and the filter. But if you have if and else both, that time we mention output expression,
if, else, and then iterable. Clear? First output expression, then if, then else, and then our for loop. See? First output expression, if condition, else condition, then the for loop. Clear? Clear everyone? I am giving you one small task. ये सबको समझ में आ गया ना? Least comprehension. Yes, ma'am. I am giving you very small task. That is, you create a list. Okay, this is your list. You take the same numbers. Now, you need to check. Do you have any number जिसके last में 0 है? You need to check whether you have any number जिसके last में 0 है या नहीं. Okay, you need to check whether you have any number जिसके last में 0 है या नहीं. Okay, अगर 0 है तो आपको 0 लिखना है उसके लिए. Okay, अगर नहीं है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो. ओके, तो जो भी नंबर आपके पास है, यू फर्स्ट नीड टू चेक कि उसके नंबर के लास्ट में 0 है या नहीं. ओके, एंड अगर नहीं 0 है तो आप नो 0 लिख दो, अगर ये इजी हो रहा है तो. ओके, so I want a list where the output will be like 0 0 no 0 0 no 0 no 0. आई एम गिविंग यू वन हिंट. दैट इज आप कैसे चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने इवन और चेक किया था विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलस 2. तो आप 10 से डिवाइड करके देख सकते हो. अगर आंसर मिल गया, मतलब अगर लास्ट में कुछ रिमाइंडर नहीं रहा, इट मीन्स दैट नंबर हैज 0. अगर रहा तो उसका रिमाइंडर तो 0 नहीं है. ओके, जस्ट चेक वेदर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 0 ऑन, सॉरी 10 और नॉट. ओके, you have 2 minutes.
Done. Any question, anyone? Okay. Moving to the next. मैम एक बार बता दो, नहीं हुआ। नहीं हुआ आप खुद करके लाओ, नहीं हुआ तो फिर मैं बोलूंगी, आप ट्राई तो करो पहले, कल करके लाओ। गलत ही करके लाओ, फिर मैं बता दूंगी। लाइव लाइव और ओके। Sure, we have created another one जहाँ पे we have taken a list and if the number is even, we have done the square of that number. Otherwise, we have done the cube of that number. प्रशांत ने क्या किया? ओके, एक चीज नोटिस करो प्रशांत, दैट इज आपको लीस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ करना है। पॉइंट नंबर 1, ये आपने नॉर्मल कोड लिखा है, आपको लीस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ ये सॉल्व करना था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप नॉर्मली भी करो, उसमें भी आपको फॉर लूप के अंदर आपका इफ एल्स है, आपने फॉर लूप क्रिएट करके फिर बाहर चले गए इफ एंड एल्स लेके, तो ये इफ एंड एल्स फॉर लूप के अंदर तो है ही नहीं, है ना। पॉइंट नंबर 3, फॉर लूप आपने स्पेस देके क्रिएट की है, तो ये लिस्ट क्रिएट करने के बाद ये जो नंबर्स लिस्ट के अंदर है, इफ यू वांट टू आइटरेट देम थ्रू अ फॉर लूप, उसके लिए आपका ये फॉर लूप को एकदम शुरुआत से कोड लाइन का शुरू शुरू से होना चाहिए, राइट। तो ये लिस्ट के अंदर आपने फॉर लूप क्रिएट की है जिसकी जरूरत है ही नहीं, इसके लिए पॉइंट नंबर 1 ये नहीं चल रहा है। पॉइंट नंबर 2, फिर इफ एंड एल्स आपने बाहर कर दी है जो आपको फॉर लूप के अंदर करना है, स्पेस देके मतलब ओके वो ये सब ट्राई करो आप, ये नॉर्मल कोड से भी करो एंड फिर ये हो जाए तो फिर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ भी ट्राई करो। हाँ, लेकिन लिस्ट कॉम्प्रेशन का मेरा पार्ट जो है मिसिंग है, इसलिए वो नहीं है अंदर। तुम्हारे ने क्या किया है, वो zero जरा कम देखिए और आई इन इफ द नंबर इज इवन। हाँ हाँ, आपको तो इवन नहीं चेक करना था, आपने तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। क्वेश्चन ये था कि आप चेक करो वो 10 से डिविजिबल है या नहीं, उसके एंड में 0 है या नहीं। 66 भी तो इवन है बट उसके एंड में 0 नहीं है, तो हमें इवन चेक करना नहीं है, हमें वो 10 से डिविजिबल है या नहीं वो चेक करना है, तो 2 की जगह 10 डालना है। ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है। एंड आपको इफ एंड एल्स बोथ ऐड करना है, नहीं तो ये कंडीशन के लिए सिर्फ 0 0 0 ऐड हो जाएगा, मुझे तो नो 0 भी ऐड करना है ना। 2 की जगह में हम सिर्फ 10 ऐड करना है एंड देन नॉन जीरो भी निकालना है। हाँ, नॉन जीरो भी निकालना है, तो अगर इफ एंड एल्स दोनों रहा तो वो तो हाँ। पहले डालना पड़ता है ना, वही तो हमने हम्म, सीखा अभी। फिर लास्ट में आइटरेबल आता है, इफ वी हैव इफ एंड एल्स बोथ इन माय लीस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ओके। एकदम ठंडे दिमाग से अच्छे से करो, फिर कल दिखाओ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फाइल हैंडलिंग। तो ये करने के लिए आपको एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। इफ यू ऑलरेडी हैव देन फाइन, इफ यू डोंट हैव देन ओपन योर नोटपैड एंड राइट एनीथिंग एंड एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करो अपने फोल्डर में। हो जाए तो यहाँ पे डन लिखो वो चैट। मैम किस टाइप की टेक्स्ट फाइल बनानी है, एक पैराग्राफ में? टेक्स्ट फाइल आप कुछ भी लिखो, आप नाम, आपका 3 4 फ्रेंडों का नाम लिख लो एक के बाद एक, फिर एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करो।
गुड गौरी, आपको ये अभी लीस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ क्रिएट करना है इन वन लाइन। वो आप बाद में भी कर सकते हो, अभी ये सीख लो। हाँ भी मैम, दिखा लेकिन मैम आउटपुट उसका जो है 3 लाइन्स में आ रहा है, वन टाइम में आउटपुट नहीं मिल रहा है। ओके, वो जो आपने अपेंड की है ना, हम्म दिखाओ थोड़ा क्या आउटपुट आ रहा है। ओ, आपने ये प्रिंट के आगे जो गैप आपने दी है ना, वो रिमूव कर लो। उसमें क्या हो रहा है, एवरी टाइम यू आर एडिंग वन नंबर इट्स प्रिंटिंग। तो वो अगर रिमूव कर दो तो ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक साथ में आपको रिजल्ट दिखाएगा। हो गया सबका टेक्स्ट फाइल क्रिएट। नाउ वी नीड टू ऐड दैट टू आवर एग्जिस्टिंग नोटबुक। So let's say I'm adding um, I'm taking this txt file, okay? And another one I'm taking. Okay, now when we are opening any file in our notebook, so that we can manipulate that, or we can read that, or we can write something on that, or we can append something on that, or we can delete something from there. Or if I want to find out whether a particular file exists in my system or not, that time we do these kind of tasks. Okay, these kind of codes we use to do that. Now this is how we open. So अगर आपको कुछ भी करना है कोई भी फाइल में, अगर आपको कुछ लिखना है, कुछ रीड करना है, कुछ अपेंड करना है, अगर इफ यू वांट टू डू एनी ऑफ देम, फर्स्ट आपको ओपन करना पड़ता है वो वाला फाइल। ओके, सो दिस इज हाउ वी ओपन अ फाइल। You need to give a name to your object and then open, and within parentheses we need to mention that which one file you want to deal with. Okay, and in which mode. So there are different modes available. See, R mode we use to open a file for reading. W mode we use to open a new file for writing. If the file already exists, its old contents are destroyed. So if we are opening any file in W mode, okay, W mode meaning I want to write something. तो मान लो जो नाम में आप वो W फाइल ओपन कर रहे हो, जिस जो भी नाम, let's say ABC name, comma, W mode. So let's say you already have one file named ABC. So what will happen? That old one will destroy and you will be able to create a new file with the same name. Because we all know in our system we can't keep same files with same names or different files with same names, right? Same name हम नहीं रख सकते, that is the rule. So here if you have the same name, so it will destroy your old one and will create a new one. Okay, so whenever we are opening any file in W mode, we have to make sure that whether we have any file with that same name or not. Okay, so for that we have ways, we'll show you how to do that. Next, open a file for appending data from the end of the file. Now in this A mode, you can append something at the end of your existing file. Okay, then we have RB mode, then we have WB mode, which we don't use much.
So we'll focus on R, W, and A. Okay. So I will show you how to do that. See, first I'm showing you how to open a file. So before opening this, you have to make sure that you have added that to your notebook. You have added that from here. Okay, open, go to files, upload to your session storage, go to here, go to file and upload to your session storage. Then take your text file, precedent. Here I have two text files, one is test, one is precedence. Whatever name you have given, you add that to your notebook first. Then you will be able to do this. Do that. Okay, another one rule. Whenever you open any file, make sure you are closing it. Okay, so whenever you are writing that open code below, you have to mention that file name dot close. Okay, try this. Okay, if you haven't added that here, you won't be able to play this code. Next, see, here I have one file named precedence. Okay, this one. Fine. Now I want to add few more names to my existing file. Okay, first let me show you what I have in this precedence. I have few names. Okay, this is my current. Now, what I'm doing, I'm adding few more names to it. Okay, now here, can you see one thing, try and finally? Try and finally is like uh, similar to your if and else, but not exactly. Why I'm saying this? Because if I'm talking about if and else, let's say in if and else, how it works? If this condition is true, then it will do the task from here and leave. It will not visit else, right? It will not come to else. If this condition is false, then it will come to else and will do the task. Agree? Agree with me, everyone? If and else. Yes, ma'am. Now, in try and finally, how it works? In try, whatever code you mention, if there is any error, मान लो अगर ये कोड नहीं काम कर रहा है, if it's giving us error, if it's throwing us error, this finally will do its task. Meaning, अगर ये काम नहीं किया तो ऑटोमेटिकली ये फाइल क्लोज हो जाएगा, ये हमें एरर नहीं देगा. Let's try to play this. Okay, now here I have added, with the help of writing, I have added all these names. Okay, now let's check this precedent. Okay, anyone using Jupyter? Anyone doing the same task in Jupyter? अगर कोई यूज कर रहे हो तो you can see the change instantly. But here I can show you the change through this. See,
जुबेर, इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग, आपको नोटबुक में तो आप जुपिटर से नहीं ऐड कर सकते ये सारे टेक्स्ट फाइल, आपको सिर्फ वो जुपिटर के अंदर ये ऐड करना पड़ता है। यू एबल टू डू दैट? आपने किया क्या? नो, आपको करना पड़ेगा वो फाइल्स में जाके, यू नीड टू ऐड अ न्यू फाइल दैट इज योर टेस्ट फाइल और वॉट एवर नेम यू हैव गिवन, वो वाला आपको ऐड करना पड़ेगा एंड आप इंस्टेंटली चेंज देख सकते हो। श्योर, आई कैन शो यू दैट चेंज। ये टेक्स्ट वाली फाइल लाना कहाँ से, मतलब आपके पास टेक्स्ट तो ऑलरेडी क्रिएट सेव? कर लो ना। हाँ, आप क्रिएट करो, मैंने वही तो बोला ना। आप नोटपैड में कुछ भी लिखो, लिख के वो सेव कर लो, वो टेक्स्ट में ही सेव होता है, टेक्स्ट फाइल होके। ओके। जैसे हम डॉक फाइल, ये फाइल, वो फाइल ऐसे सेव करते हैं ना, ऐसे अगर आप ये नोटपैड में कुछ भी लिखो, वो नो टेक्स्ट में सेव होता है, .txt में। मैम वो तो हो गया, लेकिन मैम इस पे गूगल कोलैब पे कैसे लाऊं उसको? ये तो मैंने दिखाया ना, आप कहाँ पे थे? हाँ तो मैम यही। हाँ, तो क्यों नहीं दिखा? यहाँ से मैंने 3-4 बार दिखाया कि यहाँ पे जाओ, क्लिक करो, फिर ऐड करो यहाँ से। लेकिन मैम ना मेरे में ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है फाइल्स में, आपके में आ रहा है ना ये? आप स्क्रीनशॉट लो आपका स्क्रीन का एक बार। ओके मैम। आपका क्या ऐसा आ रहा है क्या? देखो, हाँ। यहाँ पे क्लिक करो फाइल्स में। ओके। हाँ ठीक है मैम, हो गया। Now we have added all these things to my precedents.txt. Now I want to append few more. So for that I'm doing this. Okay. यहाँ पे मैंने out file नाम दिया है. You can give any name. The same way I have added 2 more names. Okay. Now what is this backslash n? Backslash n से हम next line में जा सकते हैं. Okay. If I'm adding these 2 names, Akriti and Joha, I don't add them side. I don't want to add them side by side. I want to add them in the next line. So if I add this backslash n, it will help us to go to the next line. So Akriti, next line, Joha, next line. तो कर्सर मेरा जोहा के नीचे वाला लाइन पे है अभी। Now let's read what I have in this precedent.txt. Akriti, Joha added. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बैकस्लैश n ऐड कर दूं, जोहा के बाद ये नेक्स्ट लाइन में था, फिर मैंने बैकस्लैश n डाला तो ये नीचे वाला लाइन में गया, फिर आकृति आ गया, फिर उसके नीचे वाला लाइन में जोहा। So this backslash n helps us to go to the next line. हम उसको वन टाइम रिपीट कीजिए ना जरा, बैक स्लैश जो आपने लगाया था। हाँ, ये आप जितने बार ऐड करोगे तो ये इसके नीचे ऐड होता जाएगा, बिकॉज ये तो ऐड हो गया एक बार, तो अगर मैं ये फिर से प्ले करूंगी तो ये फिर से ऐड हो जाएगा। ठीक? अगर मैं ये रिमूव कर दूं तो एक गैप कम हो जाएगा। ओके, अभी मेरा कर्सर यहाँ पे ही है, अगर मैं अभी कुछ ऐड करूंगी तो ये इसके बाद से ऐड हो जाएगा। सी, इफ आई रिमूव दिस बैकस्लैश n, ठीक है, तो ये जोहा के पास से ही ये आकृति शुरू हो जाएगा। ठीक, तो आप ये जितने बार ऐड करोगे उतने बार ऐड होता जाएगा। ये बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू रीड ओनली फर्स्ट 10 लेटर्स, वो भी आप कर सकते हो। यू कैन मेंशन दैट हाउ मेनी लेटर्स यू वांट टू रीड, हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट टू रीड। मुझे फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स रीड करना है, तो मैंने यहाँ पे इनफाइल डॉट रीड, रीड आर मोड मीनिंग रीडिंग मोड, रीड मोड में मैंने 10 लिख के दिए। अगर आपको और ज्यादा कैरेक्टर्स रीड करना है, यू कैन मेंशन दैट। सतीश, okay, what I have mentioned 10 characters. So 1, 2, 3, 4, 5,
6. Next line meaning \n, that is another one character. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इतना ही है. If you want to read line by line, like I want to read first 3 lines. So I have mentioned line 1, line 2, line 3. The instead of read, I have mentioned read line. The rest are same. किसी ने इतना तक की है? Anyone tried till yours? ऐसे एक बात बताओ, आप कितने लोग like how many of you are practicing after the session? Honestly जवाब. कुछ याद है? If, else, or loop ये सब याद है? Okay, Prashant, Gauri, who else? Zubair, Rahul. प्रतीक. Good. बाकी लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस करो, नहीं तो याद नहीं रहेगा. देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट, तो याद रखना है. मैम मुझे क्वेश्चन पूछना था। हम जैसा पाइथन में कैलकुलेशन के लिए पाइथन यूज करते हैं, एक्सेल में भी कैलकुलेशन होता है ना, तो इसके लिए सेपरेट मतलब पाइथन में कैलकुलेशन ऐसा क्यों? कौन सा कैलकुलेशन? दैट मीन्स कोई भी कैलकुलेशन जो हम पाइथन में करते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया लाइक मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, जैसा कि 2 4 देन 8 था तो मल्टीप्लाई हो रहा था। दैट मीन्स जो आपने ये किए थे कैलकुलेशंस, तो वो तो एक्सेल में भी हो सकते हैं ना, तो हाँ, हो सकता है. उसके लिए पाइथन सेपरेटली मतलब। ओके. तो अगर आप एक्सेल में सीख गए कैसे कैलकुलेशन करना पड़ता है, विल यू बी एबल टू डू द सेम इन पाइथन? नो, राइट? क्योंकि पाइथन तो आपको नहीं पता है, राइट? आप सब यस कुछ एकदम शुरू से सीख रहे हो, राइट? यस तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग, नॉट अबाउट कि वो बाकी कहीं से होता है या नहीं. तो माइट बी एबल टू डू द सेम थिंग विथ योर कैलकुलेटर, बट वी आर नॉट डूइंग दैट, राइट? बिकॉज इफ यू हैव लेट्स से 10 lakhs डेटा, एंड वहां से आपको ऐसे चूज करके जो 1 lakh डेटा आपके पास है, 1 lakh 10 lakh डेटा जो भी आपके पास है, उसमें से आपको ढूंढ के वो सारे रोज लेना है जहां जिन लोगों का मान लो सैलरी 50,000 से ऊपर है, उन लोगों को लेके आपको काम करना है. So for that, the model you are creating, you are doing everything in Colab, right? So if you want to work with those people who are earning more than 50,000, हेलो मैम. हेलो. okay, so hold on, Prashant. Now अगर मान लो आप वो 50,000 से ऊपर जो लोगों का सैलरी है, you are working with those people and you are creating the model in Colab. So for that, to finding out all those people who are earning more than 50,000, you can't carry that data to Excel and then वहां से filter करके you are taking the rest of the people to your collab again, not possible, right? So it's like the basic knowledge. आपको Python पता है और आपको डिविजन नहीं आता कोड कैसे करते हैं, so it's like that. तो आपको इंग्लिश आने के लिए आपको लाइक आपको अल्फाबेट्स का नॉलेज भी तो जरूरी है ना. तो यू कांट डू एनीथिंग इफ यू डोंट नो द बेसिक. इसलिए हम इसमें भी सीख रहे हैं. ओके मान लो आई एम गिविंग माय एग्जांपल, लेट्स से मैंने एज अ डेटा साइंटिस्ट ज्वाइन किया, ओके, इनिशियली डे 1 से. तो मैंने कभी भी एज अ डेटा एनालिस्ट काम नहीं किया.
So I don't have much knowledge about Excel. I can learn that later. वो मैं डेटा साइंटिस्ट होते होते इफ माय कंपनी वांट्स फिर मैंने जाके सीख ली है, या मान लो पावर बीआई या मान लो टैबलू, फिर जाके मैंने सीखी है। तो यहाँ मैं इंटरव्यू में बैठ के अगर मैं बोलूँ, मैं कैलकुलेशन एक्सेल में करती हूँ और बाकी सब कुछ मुझे पाइथन में आता है, तो आप मुझे सिलेक्ट करोगे क्या? नहीं ना? तो वैसा ही है। या प्रशांत, टेल मी। जुबेर, यू गॉट योर पॉइंट? यस यस यस। प्रशांत, टेल मी। मैम मैंने ये जो ये फाइल ऐड की है, हम्म, लेकिन वो इसका जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। मैंने लाइन 1 लाइन 2 सब प्रिंट किया है, इसका रिजल्ट ही नहीं दिखा रहा, ब्लैंक दिखा रहा है। आपने सब सेम की है? हाँ मैम, जैसा आपने कोड किया सब मैंने सेव किया है। हाँ, ये कोड भी उसके द्वारा दिखा रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है। मेरी फाइल में मैंने टेक्स्ट ऐड किया, लेकिन वो टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा। आप सारे कोड्स भेजो एक के बाद एक। यस मैम, मैं ये पूछ रहा था, हम्म जैसे आपने भी बताया ना कि 50,000 डेटा, 1 लाख डेटा, 2 लाख डेटा, 10 लाख डेटा, हम्म जैसे अपन को इस पे मैम प्रैक्टिस कराई जाएगी ना कि ऐसे ऐसे किया जाएगा। ये तो अपन सीख रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं कि ऐसे ये कंपैरिजन होता है, लिस्ट ऐसे होता है और ये कैलकुलेशन ऐसे है। ठीक है, हम्म ये तो हम सीख रहे हैं। हम्म। इन प्रोजेक्ट पे कैसे काम करेंगे? प्रोजेक्ट तो आप सीखोगे ना कैसे काम करते हैं। तो वही, हाँ वही पूछ रहा था। हाँ, वो तो आपको सिखाया जाएगा कैसे करते हैं। ओके ओके, थैंक हम्म मैम एक लास्ट क्वेश्चन। हम्म जैसे कि एक्सेल, जब एक्सेल के पूरे सेशन खत्म हुए थे, देन उसके हम्म ऊपर एक सबमिशन, प्रोजेक्ट सबमिशन था। तो हम्म। अभी जो पाइथन का है, ये कितने सेशन के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ है क्या सबमिट करने के लिए? मतलब अभी कितने सेशन के बाद रहेगा या कुछ ये वीक एंड नेक्स्ट वीक के बाद आई थिंक यू विल गेट। नेक्स्ट वीक के बाद? ये वीक ओके तो ये हो जाएगा, फिर कल तक तुम्हारा ओप्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग हो जाएगा, नेक्स्ट वीक तक तुम्हारा लाइब्रेरीज एंड विजुअलाइजेशन हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट आई गेस यू विल गेट। ओके। और उसका मतलब कितना मंथ, मतलब कितने मंथ तक का उसको टाइम पीरियड दिया जाएगा कंप्लीट करने के लिए? दैट आई एम नॉट श्योर। मतलब एक जनरली। और वो तो टास्क के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आपको इजी कुछ दिया जाए तो वो तो कम टाइम मिलेगा। ओके। Coming to Prashant, Prashant, you have added two dots in your simple doc. Check करो। हाँ मैं 2 डॉट ऐड किया, फाइल है ना, वो भी 2 डॉट से ही सेव है। Okay, you take one TXT I file उसी लगा था 8:30 and check whether you have any lines. How many lines you have in your document, वो भी check कर लो, and फिर accept हटा दो। लगाएगा। ओके। और मैम, ये उदय आपकी यूज स्क्रीन मुंडा पे तो कुछ उसी ब्लैक लगाए। ब्लैक आ रहा है, मेरे सभी के नहीं साथ है। एलिया, और एक बार बोलो। Come again? दो दो खाली आता है, स्क्रीन एक पे ना पक्के चार के साथ कुछ 8 ब्लैक्स आ बजे। रहे हैं, पूरी स्क्रीन विजिबल हाँ नहीं हाँ है। हाँ। What? अभी बोलो, आपका नॉइज नहीं है, अभी बोलो। एक्सक्यूज मी मैम, हम्म उनका कहना है आपके स्क्रीन पे स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स आ रहा है, वो विजुअल नहीं हो रहा हाँ, है। मैंने आपका इमेज खोला है ना, इसलिए आए थे। एंड मैम एक और ये देखो, क्लियर है? नो मैम, किनारे आ रहा है अभी भी, बट हाँ प्रोग्रामिंग दिख रही है। और एक बार शेयर करो, अभी भी आ रहा है। अभी देखो। अब भी क्लियर है। बोलो। मैम एक डाउट क्लासेस होनी चाहिए वीकली या फिर मंथली, क्योंकि अभी तो मेरे इस टॉपिक पे कोई नहीं है, बट हाँ अभी मैं करने बैठूंगी तो कुछ ना कुछ रहेगा, एंड देन नेक्स्ट 2 सेशन का भी रहेगा। तो ऐसा कोई डाउट क्लासेस वगैरह का नहीं है कि हाफ आवर या फिर 1 आवर्स के ऐसे हो? हम्म, क्योंकि आई थिंक मेरे ख्याल से सबके ही होंगे कुछ ना कुछ, अगर कोई सब शुरू से प्रैक्टिस करने बैठे तो। एंड 2-3 सेशन के बाद फिर हम लोग की टेस्टिंग हो जाएगी। हाँ मैम, हाँ मतलब कैसा होता है प्रोबेबली जब प्रोजेक्ट कभी आता है ना, तो सब लोग प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, मतलब जो जब भी प्रोजेक्ट रहेगा, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तब डेफिनेटली डाउट्स बहुत सारे आ रहे हैं। जैसा कि एक्सेल हम करने गए थे ना, हमको बहुत डाउट्स आए, वो टाइम पे कोई क्लियर करने वाला था ही नहीं। और फिर सर भी चेंज हो गए थे, तो हम लोग को ऐसा था कि पूछ भी नहीं पा रहे थे किससे क्लियर करें और कैसे हाँ। करें उसको। अच्छा, so you guys need one doubt clearing session for Excel? या अभी नहीं एक्सेल मैम, एंड दिस।
यूजुअली अभी रख के कुछ फायदा नहीं, मतलब जब भी प्रोजेक्ट का टाइम आएगा ना मैम, तब वो थोड़े दिनों पहले, मतलब जैसा प्रोजेक्ट सबमिशन है उसके एक वीक पहले, जैसा प्रोजेक्ट जिस दिन आया मतलब कंप्लीट करने के लिए, तब हम प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके डाउट आएगा, तो उसके बाद रखे तो वो बेनिफिशियल रहेगा आई गेस। तो आप बोल रहे हो कि ये पाइथन खत्म हो जाए उसके बाद यू नीड वन सेशन फॉर हाँ, पाइथन। यस 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 मैम। यस। मैं लिख रही हूँ टीम को। मैम और एग्जाम का बोला था कि एंड में ही 4 एग्जाम होंगे आपके एक साथ। Namrata, you can clear all these things from the team. Anyone from the team whom you talk with? ओके, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा बोला था मैम कि आपका मतलब जैसे एक्सेल खत्म हो गया तो प्रोजेक्ट और उसके बाद आपका एग्जाम होगा सेम टाइम पे। Okay, guys, you just hold on, Namrata. आप लोगों को कौन सी टॉपिक के ऊपर डाउट क्लियरिंग सेशन चाहिए? मैम जैसे कि एक्सेल है तो एक्सेल के लिए एक डाउट क्लियरिंग सेशन, और अभी पाइथन खत्म होगा तो पाइथन के लिए एक डाउट क्लियरिंग सेशन, व्हेनेवर वी विल फिनिश ऑल दी रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग। Okay, I conveyed. हाँ नम्रता बोलो क्या बोल रहे थे? मैम वो बोल रहे थे कि आपका एग्जाम जैसे एक्सेल खत्म हो गया तो एक्सेल के बाद एक एग्जाम होगा, पाइथन के बाद एक, ऐसे 4 एग्जाम्स वी विल कंडक्ट एवरी 2 मंथ्स में। तो अभी बोल रहे कि एक साथ आपके चारों एग्जाम हम कंडक्ट करेंगे एवरी बैच में। ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसी का एक साथ होता है, किसी का लाइक सेम टाइम पे नहीं होता है एग्जाम। तो वही मुझे क्लियर करना था कि बाकी सब लोगों को भी यही बोला गया है या फिर सिर्फ ये मुझे ही बोला है कि एग्जाम आपके सब एक साथ होंगे। मैं वो एग्जाम का पैटर्न भी नहीं बताया कैसा होगा, उसके लिए स्टडी मटेरियल भी नहीं दिया। हेलो 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 Hello. Hello, guys. Am I audible? Hello. क्या की यस यू आर ऑडिबल। किरण? या टेल मी। Okay. Yes. So, as you said, Suchita, first of all, we have to complete the portion about Python. Okay. And हम्म after that, we will have to discuss with the team, and then make sure that when we can arrange the session and all the things with the team management. So Okay. guys, if you Uh, have any query, what you can do, you can put that to the आप लोगों का जो forum है ना, you can yes. put Yes. You can raise a query over the forum. Query forum also, and we will discuss with the team, and then we will. I mean, inform you. Okay. Don't worry about your doubt Python. clearing session. Yes, and Python Yes, खत्म yes. होने के बाद we'll do one डाउट क्लियरिंग सेशन। वो पहले आप हम खत्म कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट विल डू वन Yes, yes. 1 घंटे के सेशन कर लेंगे। ओके Yes, yes. हेलो So सर। Jasmita, give me 1 minute. I have another call with the team. Then I'll come back to you. You can continue till now, please. या ओके Yes. ओके सो
Let's get back to this. किसका नहीं हो रहा था, किसका कोड नहीं चल रहा था, guys can you please share that code? Okay. Okay. Now, if you want to read all the lines in one go, that time you can use this read lines instead of read line, instead of read only, you can go for read lines. With this, we can read all the lines in my file in one go. And here you can see all my \n, which is helping me to go to the next line. Okay. Now, you remember we talked about when we are pinning the file in W mode to write something. If I have any file with the same name, it will destroy the old one, right? So in that case, what we need to do, पहले हमें check करना है कि ये same नाम में कुछ है या नहीं, right? So in that case, what we can do, we can use this is file. We can import os.path, which is one module, right? And then I'm checking whether that file exists or not. Play residence.txt exists. Instead of this statement, you can change your statement, whatever you want to see. You can write yes. If that text, if that file exists, you can write yes. If not, you can write no. Okay. Now, here I have another one simple, very simple thing, that is there is something called math module, which helps us to do all the equations, all the mathematical tasks easier. That is this math. You can import this math and you can do square root of any number, factorial of any number. Do you know what is factorial? Anyone? What is factorial? स्क्वायर का स्क्वायर। नो मैम, 5 into 4 into 3 मतलब ऐसे जो नंबर है उसको कम वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है 6 5 4 3 2 1। Yes, right. So factorial आप इससे भी कर सकते हो easily. You can write any number. So what is factorial for others who don't? So factorial meaning, let's say 5. The factorial of 5, we write it like this. Factorial of 5 is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Whatever the answer is, that is the factorial of 5. So the factorial of 6 is like 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay, which is 7 times. Okay, this is called factorial, and this is square root of 16. Square root we all know, we learned in our 5, 6, right? Last 6 we learned about square root. 5 or 6, I can't remember. So another one thing is like, if you see here from math, I have imported only square root and factorial. Now let's say if I want to import everything, whatever is available in math, we write it like this. मतलब मैथ के अंदर जो कुछ भी है, आई वांट टू इंपोर्ट एवरीथिंग, जो भी फॉर्मूलाज, जो भी इक्वेशंस अवेलेबल है, आई वांट टू इंपोर्ट ऑल ऑफ देम. सो दैट टाइम वी यूज दिस स्टार. इसके मतलब आई हैव इंपोर्टेड एवरीथिंग व्हाटएवर इज अवेलेबल इन मैथ. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 50. Square root of 50. Now math.pi. What is this pi? Pi. Pi we all know, right? 2 pi r. Yes, ma'am. This is showing the value of pi. Okay, so this is our modules. Now coming to another one big thing. तो एक तो हमने सीख लिया
least comprehension. Now you are going to learn about another one big thing, like for loops, like if else, like least comprehension. This is another one big thing, that is functions. User defined function. Now what is this function? Function is like a solving box. Can you give me few examples of built-in functions, if anyone remember? Few examples of built-in functions. Int, float, Hmm? is, float, string, string. Okay. What else? इजी कितने सारे हैं ना, बताओ. Print is a function. Len, which we मैम use to find out the length of something, is a function. append, extend, pop, length, count. वो तो मेथड है. Okay. Type, yes, len, these are functions. Okay. Now we are going to use one user defined function which will help us to do something for multiple times. What it's saying? What is a function? A function is a useful device that groups together a set of statements so they can be run more than once. Meaning, if I talk about len function, len is a built-in function, right? Which we use for counting, for finding out the length of something. Now, in that case, if I want to find out length for 10 times, okay? You see, 10, like if I have 10 leaves and I want to find out their length. So what I do, I call len, which is a function for 10 times, right? So here, with the help of user-defined function, I can create a code and I can use that for multiple times to do the same task. Let's say you have a list of string, okay, where you have 4-5 names. Let's say Prashant, let's say Gauri, let's say Rahul, let's say well, okay, Gajanan, let's say Prajwal. Okay. Now I want to create one function where I'm going to take the first letter of each of your names. Okay, सबका नाम का मैं फर्स्ट लेटर लेना चाहती हूँ. Okay, and I want to create a new list जहाँ पे I will keep it like T, G, R, P, G, P, like that. Okay, so what I will do, I will create a function with the code so that I can extract all your first letters. Okay, now once I create this code, now you can come with any list. I just need to call by the name of the function and it will keep on doing the same task. So it's like a solving box. Once you create the code, you can use this for multiple tasks. Okay, see. This is how it looks. We need to start with def, then we need to mention the function name, and then within parentheses, we mention if I have any argument. We might not have the argument, we might have the argument. Okay, that depends on the function. Okay, what output we are expecting, that depends on that. Okay, and after that, if you want to write that what is the task of the function in a doc form,
You can write. This is optional. If you want to skip, you can skip. This is just to say that what is the task this function will do. Okay. Then the return the output. Okay. Now let's start. Let's create. So here I have one string. This is string. आप कोई भी sentence लेके you create your own string. Okay. Another one string. Now split is a method which helps us to split all the words. Okay, let me show you. Let's say this is a string, this is a line. Okay, now I want to split them. So what I will do, let's say s equal to l dot split. Okay, okay. Now I'm removing the space and trying to. It's not working. Why? Any guess? मैम वो डबल कोलॉन है माय नेम इज सुष्मिता में और इसमें एक कोलॉन दैट माइट बी No, 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 no. तो एक देखे ट्राई करते हैं. Still not working. वो स्पेस कम है मैम उसमें एल स्प्लिट के बाद जो आपने दो कॉमा में मतलब ये जो दो हाँ, स्पेस स्प्लिट क्यों के देना बाद है वहां पर? बीच में दो कोलॉन के बीच में स्पेस हाँ, वो क्यों देना है? मतलब वो Your बताना answer है is कि right. उसके अंदर हमारी वैल्यू पुट करना है हमको करके हाँ, your answer is right. So the thing is, when we are mentioning that ये मेरा sentence है and इसको आपको split करना है with the help of this, so I need to mention what would be my separator. So basically ये sentence को तो मैं अलग-अलग से separate कर रही हूँ, right? So while doing that, my split needs one separator. कि किस चीज के बेसिस में मैं इसको separate करूँ? So if I give space, it means अब आपको जब भी space मिले आप split कर दो. मतलब my से शुरू करो, space तो split. जहां जहां पे स्पेस मिले आप यहाँ इसको स्प्लिट करते जाओ. इफ आई मेंशन ए, so what it will do, it will split the whole sentence. ए के बेसिस में ये पूरा लाइन को स्प्लिट करेगा. सी माय नेम, तो इतने तक एक में आ गया. फिर व्हेन इट फाइंड्स ए, फिर उसके बाद से बाकी, फिर अगेन हियर आई हैव स्पेस, फिर ये बाकी इसमें आ गया. गॉट इट? तो आप आई के हिसाब से भी स्प्लिट कर सकते हो. So here I want to split them space के बेसिस. Okay, now so my job is I have one sentence, I want to split them, and after splitting the output I'm getting from here, I want to store the first letter of each word. Matlab from here M N I S, like that I want to store. So for that what I need to do, I need to, let's say letter. Okay, equal to, I'm taking the help of your this comprehension. Okay, so let's say I, from I, word I meaning my, right? So from my, I want to take the first letter, which is index value is 0, right? First letter meaning 0 index, or I in S. What I have in first letter now?
Clear? Now you think that here I have only one sentence and I have splitted that and I have shown the first letter of my each word from that list. हाँ प्रशांत बोलो. Okay. Now मान लो if I'm giving you another one sentence and asking you to do the same thing, you need to write the same code again. फिर मैंने और एक दिया और एक लाइन दिया and asking you to do the same thing. फिर आपको same code फिर से लिखना पड़ेगा. So instead of that, if you create one function, okay, तो फिर आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वो फंक्शन के नाम से कॉल करना है एंड यू विल बी एबल टू गेट द सेम थिंग मल्टीपल टाइम्स. सेम आउटपुट आपको मिल जाएगा. कोई भी सेंटेंस, कोई भी कुछ भी आप दे दो, कोई भी सेंटेंस आप दे दो और ये वाला फंक्शन को कॉल कर दो. ठीक है, तो कैसे करते हैं वो? दिस इज हाउ वी def and I need to give a name to my function and this is my input. Okay, input argument. Okay, मतलब जो सेंटेंस का के ऊपर आप ये फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो वो सेंटेंस का नाम. ठीक है. After that you have your code and you need to return the output. So I'm coming back to this and adding def let's say for later factor. Okay, parenthesis and I need to mention the sentence name. Okay, now after that everything will be within this. Whatever code you are writing, everything will be within this line. Okay, now after doing this you need to return the output. Now play. Now, okay, your code is ready. Okay, you have created one base. Now how to call your function? See, here I have created the base. Now आप कोई भी सेंटेंस लाके को कॉल करना है सिर्फ आपको. ओके, दिस इज हाउ वी कॉल. आप कोई भी सेंटेंस मुझे दे दो. So what I need to do, let's say print. What is your function name? First letter extractor, right? So first letter extractor and my sentence name is L, right? L is my sentence name. This is my sentence name. Okay, आप अभी अभी ये L की जगह कोई भी सेंटेंस दे दो. मान लो ये वाला सेंटेंस. Easy. We'll do few more examples. As of now, is it easy? Any question, anyone? Any confusion, anyone? No, ma'am. किसी और का? If I ask you to create one function where we will be able to extract the second letter of the word, can you do that? If I give you one sentence, will you be able to extract the second letter from each of the word in that sentence? वो आपको करके लाना है. Tomorrow I will check. Okay, ma'am. हो जाएगा ना सबका? Right. होना चाहिए मैम. Others? Any question, anyone? मैम नोटबुक सेंड कर देते. नोटबुक में कल दूंगी. I'm telling you why. क्योंकि मैं Why? अगर देखूंगी तो ये आप यहाँ से मिल जाएगा आपको. I want you to try from your side. फिर कल मैं दे दूंगी.
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेके ट्राई करो। What is task 2? Okay guys, bye then.